Okay, let me see how many you're able to name. Okay, plasma दे दिया है, वर्निका has said plasma, राहुल, और भी बहुत कुछ होता है. Okay, संचित gave RBC, WBC, still there are. Okay, अरे बच्चों एक चीज भूल रहे हो आप लोग. हाँ, प्रणव has completed the series. That is platelets. बेटे प्लेटलेट्स कैसे भूल सकते हो आप लोग, इसी की तो कमी पड़ती है ना. फिर कच्चे पपीते का रस पीना पड़ता है. हाँ, डेंगू से याद आया हमको तो, मतलब प्लेटलेट्स कम होते हैं. चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड. So this is the level of activity I want. So in as a filler I'll be asking many questions and I'll also be sharing many facts, ठीक है, which will help you in biology exam. ठीक है. So yeah, this is the first question. The poll is in front of you. You can start answering. Hurry up everyone. So please try using the poll option. ठीक है. Or let me show you the answer now. So the correct answer for this question, and you can see the year also today, है ना, किस year में ये question पूछा गया था. So that is NDA 2014, right? So leprosy is caused by a bacteria, right? And the name of that is Mycobacterium leprae. It's a slow-growing organism and it causes Hansen's disease, which is commonly known as leprosy. मतलब one time there was a question like leprosy is also known as. So that the correct answer was Hansen disease, right? So you can see your results, how you have done. So out of 80% students who have polled, 43% got it correct. That is 9 out of 21 have got it correct. बाकी सब तो मेरे को लगता है randomly लगा रहे थे, है ना? So yeah, and see this disease is like it has a very special reference to our history also, है ना? You all know महात्मा गांधी जो थे, इसकी eradication में काफी उन्होंने help किया. इनफैक्ट मेरे ख्याल से इनका जो एक डे भी होता है 30 जनवरी. व्हाट इज दैट डे निखिल, यू आर ट्राइंग टू से? 30 जनवरी को ही दिस पर्सन, फादर ऑफ नेशन, ही लेफ्ट द वर्ल्ड आल्सो 11:30 बजे समथिंग. ओके निखिल, आई थिंक इज इट इंटरनेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन डे? मार्टियर डे तो है, चेक करो व्हेन इज इंटरनेशनल. ओहो, ये लिखा तो हुआ है एंटी लेप्रेसी डे. Okay, so our father of nation, he has contributed a lot. Okay, he has contributed a lot in terms of eradicating the disease of leprosy. There was there was a mentality of many people in general not to touch and to avoid those who are वो लोग avoid करते थे people suffering from leprosy. Okay, but again, because of Gandhiji, people became like aware and they started treatment of these people. And yes, our intention is to have a leprosy free India. ठीक है, and the government has taken many initiatives जो वो बार बार चिल्ला चिल्ला के प्रमोट करती रहती है. That's good also. कई बार लोगों को पता ही नहीं होती कि मेरे लिए भी कोई स्कीम आ रखी है. Of course ये पैसा डबल करने वाले नहीं है 25 दिन में, right? So you see, complete treatment of leprosy, that is multi-drug therapy, is available free of cost in all the government dispensaries, health centers and hospitals. Okay, there's timely treatment and prevention of disability, right? And they have also shown you the symptoms. Okay, what are the symptoms of this disease? Light color patch, redness, swelling or nodules over the skin will be visible. Okay, and if there is any suspicion, you can just contact the nearest health center, right? Here we go for the next question now. So this is the next question in front of you.
and use the poll option only. Chalo, start answering this question. Okay, we can also have some follow-up questions here, right? So, yeah. So the first question can be related to the virus. Okay. So virus, आपको पता है viruses, they are very diverse and they are very common. They come in a lot of shapes and structures. हर वायरस का अलग अलग नाम भी होता है, हर वायरस का अपना अपना जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, ठीक है ना? एंड अलग अलग होस्ट को वो क्या करते हैं, अफेक्ट भी करते हैं, राइट? एंड या all of you must be knowing that viruses जो होते हैं, they are not considered as living, है ना? They are living only when they are inside the human cell. Outside again they are presumed to be dead. Okay. So virus के अंदर proper cell structure भी नहीं होता है. They are very small, much smaller than the cells of living things. Okay. So basically एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि they are just this the packages of nucleic acids and protein, right? They may have DNA, they may have RNA, and they have a protein coating. Okay, they have a protein coating. And yeah, let us show you the answer also. So here the correct answer is dengue only. And as you can see, this has been मतलब almost 50% बच्चों ने इसका आंसर सही किया है, ठीक है ना? So this is also known as break-born fever. And let me see, this question was asked in the year 2014. Just hold on. Yeah. Okay. So again, it's a viral infection. That's why I was discussing so much about virus. बहुत सारे अलग-अलग diseases होती हैं. So this is a viral disease which is being discussed, right? Acha, can you let us have a list? Let us have a list of diseases caused by virus. So the chat section is open in front of you. You can start naming the diseases. Okay. So first, let me know measles. Do you think measles is caused by virus? ओके, हाँ वो तो पता ही था मेरे को, तुम लोग कोरोना पहले लिखोगे। और बताओ, ओके, फ्लू, कृपा से फ्लू, पोलियो, वाह, इसके वैरायटी भी आ रही है उसको कोरोना का। ओमिक्रॉन भी लिख रहे हैं, डेल्टा क्रॉन भी लिख रहे हैं। और सोचो, पोलियो इज डन, कोविड इज डन, टाइफाइड ओके, और भी कितों के, चिकन पॉक्स इज देयर, टीबी इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। Anjali, just check once. I don't think. What do you think, everyone? TB. What is the like pathogen for TB? Rabies, yes, rabies virus, flu virus. Then chickenpox is virus. Malaria, pneumonia, elephantiasis again doubtful. Rubella is caused by virus. That's correct. Okay. किसी ने अभी तक ना कॉमन कोल्ड नहीं लिखा. I don't know. Let me check the previous section. जो सबसे वो था, लो कोल्ड अभी तक किसी ने नहीं लिखा, सब कोविड कोविड लिखे जा रहे हैं. कॉमन कोल्ड इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस. टफ. हाँ ये लो, एड्स भी आ गया. व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? दैट यू कैन पुट इन हियर. ओके. राइट, एचआईवी आ गया, हर्पिस आ गया. वेरी गुड. पैथोजेंस व्हिच आर द डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, ये कई बार पूछते जाते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिसीज. दे आर द पैथोजेंस आल्सो. ओके. सो लेट अस सी. अभी तक आप लोगों ने जो नहीं दिया है मैं वो बता रहा हूँ. ओके, नाउ प्लीज डोंट रिपीट. आप चैट सेक्शन पढ़ लो एंड ट्राई टू गिव अ यूनिक वन. चलो एक यूनिक मैं ही दे देता हूँ आपको.
येलो फीवर किसी ने नहीं बोला अभी तक. Yeah, I'll just put it up here. It is yellow fever. This is also caused by virus. और बताओ मैं यूनिक कि आप लोग भी बताएंगे कुछ. Sir, what is the rhinitis? Right in the chat section. अब मैं लिख दूंगा तो फिर ये मत बोलना कि मेरे माइंड में था और लिखा नहीं मैंने. इतना इंपॉर्टेंट वायरस आप लोगों ने छोड़ दिया. जीका वायरस भी तो आया था. अब फिर मैं एक लिखने वाला हूँ. अगेन आई राइट वन वायरस. फिर आप लोग बोलोगे कि हमारे मतलब अगेन इट वाज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड. लिखो ऐसी जीका वाज जस्ट अ ट्रिगर विथ मेनी अदर डिसीजेस रिलेटेबल एंड. हाँ नीपा. सही. जीका हो गया, नीपा हो गया. एक और रह गया. उसने उसने भी अच्छी खासी तबाही मचाई थी. हेपेटाइटिस इज ऑल्सो करेक्ट. बर्ड फ्लू डन. अब मैं लिखने वाला हूँ. आपने बहुत ही फेमस वायरस मिस कर दिया. आई डोंट नो हाउ. ये अफ्रीका में बहुत फैली थी. ओके अंजलि ने लिख दिया. वेरी गुड अंजलि. सिटीज ई बोला. सुशांत ऑल्सो. चलो कम से कम आ गए. स्वाइन फ्लू इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. ओके. सो अब जस्ट एक एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो. पूरा रिकैप करो जितने भी वायरस के कॉजेस डिजीजेस थे ना. जस्ट गो थ्रू रिकैप ऑफ द चैट सेक्शन ओनली, है ना. तो आपके माइंड में एम्बेड हो जाएगा कि दीज ऑल डिसीजेस आर हैविंग अ कॉमन पैथोजन दैट इज वायरस, है ना. और जिसने रिकैप कर लिया यू कैन राइट डन सर इन द चैट सेक्शन. Okay, whether it's malaria, dengue, yellow fever, cough, COVID, common cold. Okay, then we have hepatitis, rabies, mumps, measles, rubella. Okay. तो यू सी डेंगू कह लो, डेंगी भी बोलते हैं इसको, है ना. और कुछ राज्यों में ये गाली भी है, लाइक सिमिलर टू दैट. And high fever, swollen lymph glands, muscle and joint pain, nose bleeding, abdominal pain, excessive vomiting. Okay, and the preventing tips. Okay, very good for those who have done their revision as well. Okay, तो इसी तरह से आपको लर्निंग का प्रोसेस रखना है. ब्रेन में जब तक रिपीटेशन नहीं करोगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू गेट इनटू योर परमानेंट मेमोरी. हमारी मेमोरी बहुत धोखेबाज भी होती है. अभी कुछ याद कर लोगे ना, वो आपको ऐसा यकीन दिलाएगी कि हाँ मेरे माइंड में ये चीज जा चुकी है, बट नहीं जाती कई बार, है ना. चलो. तो मॉस्किटोज ब्रीड इन. ये तो केजरीवाल ने प्रमोशन कर करके ना डेंगू के खिलाफ काफी अवेयरनेस फैलाया था व्हेन आई वाज इन दिल्ली. Okay, so mosquitoes breed in standing water, so eliminate anything standing in water, है ना. रुका हुआ पानी is very dangerous for dengue fever. Okay, you have to use good mosquito repellents to get rid of mosquitoes around you, your house. Keep them away from you. Use mosquito repellents. You should stay in well screened house or air condition. You have to have a protective clothing, है ना. So all these things matter a lot. There is a fish, guppy fish in swimming pools, which eats the bacteria. Chalo. So let's move on to the next question. I'll just turn the poll option. Okay. So here is your question. Which one of the following is not caused by polluted water? है ना. Polluted water से कैसे है. ठीक है. चलो जब तक हम हमारी डिस्कशन भी चालू रखते हैं. राइट. ओके. लेट मी नो. जो प्रोटीन का कोटिंग, वायरस का जो प्रोटीन कोटिंग होता है, व्हाट इज द नेम. वायरस का जो प्रोटीन का कोटिंग होता है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट. लास्ट में मैं चैट सेक्शन में लिख दूंगा.
Very good, Rahul and Kripa. Capsid is the correct answer. Okay, let me put it in the chat section also so that others can follow what's right and what's wrong. Chalo. Now moving on to the answer of this question. The answer is tuberculosis. Okay, so option D is correct. यहाँ पे ठीक है, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर ही किया है इसका, like half of them. Okay, so you can see and let me end the poll. Yeah, so tuberculosis आपको पता है जो टीबी है ना, you already know this, right? So the infectious tuberculosis is potentially fatal disease and primarily affects tuberculosis बैक्टीरिया. अभी किसी ने टीबी का लिखा था कि वो वायरस से कॉज होता है, देखो यहाँ पे बैक्टीरिया ही बता रहा है ना. तो tuberculosis bacteria are communicated from person to person via droplets which are discharged by air through constant cough and sneezing, right? So ये आप लोग सिम्टम्स देख सकते हैं टीबी के. आप टीबी का तो देखो अमिताभ बच्चन ने इतना प्रचार किया है ना, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, है ना, उसका तो बैड देख देख के मुझे खांसी आने लग जाती है. ठीक है, सो या अगेन यू नो दोस पीपल, उन्होंने इतना काम किया तब जाके आपको इस बीमारी के बारे में पता लगा. ठीक है, सो यहाँ तो 2 हफ्ते बोले थे अमिताभ बच्चन ने, यहाँ तो 3 वीक्स लिखा है. एनीवे ये लगता है कुछ ज्यादा सीरियस होके मानेंगे. देन कफ में ब्लड आ जाए, फीवर होना, पर रात को सोते वक्त पसीना आना, जल्दी थक जाना, है ना, और वेट लॉस बहुत सारा होना, चिल्स होना, एपिटाइट लूज हो जाना, चेस्ट पेन, पेल विद ब्रीथिंग और कफिंग. These all are signs and symptoms of tuberculosis. ठीक है, now next question. बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज की जाती हैं, that you have to identify. Okay, I'm launching the poll again. ओके, सो टाइम फॉर द आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन डी, और बहुत लोगों ने इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया. एज आई कैन सी 67% ऑफ दोस हु हैव पोल्ड हैव गॉट इट करेक्ट. ओके, एंड इस क्वेश्चन को सही करना वाकई में मायने रखता है, क्योंकि है ना, अगर मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिया और उसमें से कोई एक चुनना तो बड़ा अच्छा लगता है. ये बड़ा खतरनाक होता है यूपीएससी वाला, है ना. 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे बताओ सारे सही हैं, ये सही है, वो सही है, मतलब they just increase the difficulty level like that. Okay, anyway, let's move on. Okay, एक एडमिट, ये तो आपको पता है एलिफेंटियासिस की बीमारी है. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, जब तक आपको इसकी स्टोरी बता देंगे.
Okay, so here the correct answer, which has again, यहाँ सब लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं, है ना? और लगभग पिग और हॉर्स को बराबर में वोटिंग मिला है ना? एंड देन यू कैन सी सबसे ज्यादा वोटिंग तो सही आंसर को मिला है, राइट? सो इसका सही जो आंसर है दैट इज काउ, है ना? काउ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, right? So let us see the actual meaning of this. Yeah. So vaccine has the Latin origin, है ना? That is vaca. That means cow. So the word vaccination has been derived from a Latin word which relates to a cow, है ना? इसका relationship cow से है, because the cowpox material used for injection was then called vaccine. The injection itself was called a vaccination. That इसकी story बहुत simple है ना? ये जो शब्द आया वेरियोलेशन से आया है, राइट? सो इसका आपको पता है, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट है उनका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है ना? ही वाज फ्रॉम यूके. सो इन द ईयर 1786 इन्होंने काउ पॉक्स से जो है स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट किया था, राइट? मतलब वही है कि क्या बोलते हैं, बॉडी को इम्यून रेस्पॉन्स देने के लिए हेल्प करती थी वैक्सीन. मतलब बॉडी क्या करती थी, छोटे छोटे एक तरह से कमजोर बैक्टीरिया या डेड बैक्टीरिया भेज देती थी, और इम्यून सिस्टम क्या उससे लड़ता था, है ना? फिर जब रियल बैक्टीरिया आते थे तो द इम्यून सिस्टम हैड कैपेबिलिटी टू फाइट विद देम, ठीक है? इस पर कई बार इसमें सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, लाइक सिकनेस एंड ऑल. ओके, सो दैट वे यू कैन सी. कुल मिला के इसका स्टोरी ऐसा है कि बड़े दुश्मन को मारने के पहले ये ट्रेनिंग देता है बॉडी को छोटे छोटे दुश्मनों से लड़ने की. जब बॉडी उसमें सक्सेसफुल हो जाता है वैक्सीनेशन के थ्रू, है ना, फिर बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो जान लेती है प्रॉपरली, ठीक है ना? चलो, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. ये मैंने पोल लॉन्च कर दिया. द क्वेश्चन इज विच एलिफेंटियासिस का, है ना, नाम पूछ रहे हैं. अभी इसका जस्ट एक पिक्चर भी आया था, ओके? सो अगर आपने उसको भी अटेंशन दे दिया होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना? अरे मैंने बायोलॉजी तो नहीं ली थी 12th क्लास में, लेकिन किसी ने मुझे इस बीमारी का डिसीज दिखाया था, उसका इतना बड़ा पाव था, आज तक मेरे माइंड से नहीं हटा, है ना? आज तक. तो दैट वाज रियली अ हॉरिबल, वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर मी. मतलब उस बच्चे ने दिखाया भी मुझे वही इमेज, है ना, कि सर देखो इतनी तरह की बीमारियां होती है, तो माइंड से ना एकदम हटा ही नहीं. तो इट्स स्टिल टिल टुडे आई रिमेम्बर द डिसीज ऑफ एलिफेंटियासिस. इसको हिंदी में ना हाथी पांव बोलते हैं. जैसा नाम वैसे ही बीमारी होती है इसकी, खतरनाक. आई डोंट नो, आउट ऑफ ऑल दोस हु आर प्रेजेंट हियर, कितने लोगों ने इसमें लाइव पर्सन को देखा है इन्फेक्टेड होते हुए. आई हैवंट सीन एनीवन लाइव दो, बट वो पिक्चर ही काफी थी मेरे माइंड में, है ना? एनीवे, सो यू ऑल नो द आंसर, ठीक है? ओके. तो लोगों के तो आसपास में ही है. एनीवे, सो दिस इज वेरी लाइक, क्या बोले, वेरी डिस्गस्टिंग डिसीज ऑल्सो, है ना? तो ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम है विकीरिया. ऐसे तो नाम ही इसका ऐसा है, जवान को लकवा मार जाए ऐसे तो, है ना? तो फिलेरियल वर्म रहता है, जिसका पिक्चर आप देख सकते हो, है ना? राइट, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
Okay, so the correct answer of this question is carbon monoxide. है ना? We have already had a discussion, so this is a common topic between bio and chemistry. And good to see that most of you have, like almost, you can see the results, 76% of you have answered this question correctly, right? Now we move on to the next question. Okay, now some question related to the uh, organs. Okay, so very easy question है ना? Amylase है उस एंजाइम का नाम. इजी और सीरियस 2020 में पूछा भी गया है, देखो. ठीक है, can't be easier than this. Okay, D option. So we know saliva. Acha, can you tell me the nature of saliva? Acidic, basic, neutral? Put it in the chat section. What is the nature of our saliva? Vernica is acidic. What about others? Acidic, neutral. I think it should be basic. Okay. Saliva is basic in nature. हमारी बॉडी की एसिडिटी को ही न्यूट्रलाइज कर सकती है. Anyway. Okay, so now the next question. Okay. Okay, was the poll launched for this? Let me relaunch it. I think it was not launched successfully. Okay, so SAN is the correct answer for this question, right? So sino-arterial node is a region of cardiac fibers located in the right atrium. Okay. Now you know our heart has got 4 chambers like this: right atrium, left ventricle, and the right ventricle, right? So इसके और भी questions आएंगे आपके पास. Here is the next question.
Let's talk about heart only here, right? Okay, so very easy question, the cardiac cycle, right? Right. Now, yes, you already know that the cardiac cycle, it is the sequence of coordinated events which are taking place in your heart during each beat. Okay. So you can see the system here, right? And yeah, very basic question, only 30 seconds, everyone. 30 seconds के अंदर इसका आप लोग आंसर देना. वैसे हार्ट बीट से याद आया कि जैसे जिनकी हार्ट बीट जितनी स्लो होती है ना, उनकी लाइफ भी उतनी लंबी होती है. जैसे जो मतलब दिस इज व्हाट आई हैव कम टू नो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो एथलेटिक्स वाले होते हैं ना, उनकी जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल एक एवरेज ह्यूमन से थोड़ी कम होती है ना, बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस एंड ऑल्सो दे आर एबल टू bring it further lower than 72. It's actually 60 and sometimes it is 55 also, है ना. एंड वैसे भी हम लाइफ में भी देखते हैं जो क्या बोलते हैं, जैसे वी कैन सी टर्टोइस, है ना, टर्टल जो 200 इयर्स तक जीते हैं, मतलब ऑलमोस्ट. सो आई थिंक दे टेक 1 beat per minute ओनली. एंड वेयर एज यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ डॉग जो हर वक्त हाफता ही रहता है ना. सो क्या बोलते हैं, उसका लाइफ स्पैन भी इतना कम रहता है. सो दैट्स व्हाई लाइक इन द मेडिटेशन आल्सो दे लाइक फोकस मोर ऑन यू नो गोइंग वेरी स्लो ऑन द ब्रेथ, है ना. एकदम जितना स्लो करोगे उतना ज्यादा लॉन्जेविटी रहता है. तो 72 is the absolutely correct answer, and I think almost everyone has given the correct answer for this, those who have polled, right? Now the next question is here. Left ventricle, we all know, pumps blood into the aorta. Okay, and that's all. Next, go to the next question. Right now, you can be active in the chat section also if you have done there, right? So अभी आप लोगों ने ब्लड के चारों कंपोनेंट बताए थे, that is plasma, RBC, WBC and the platelets.
Okay, so now you all know that प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. सो इसी तरह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के क्या नाम होते हैं, दैट यू हैव टू राइट इन द चैट सेक्शन. Okay, if platelet is thrombocyte, then what will you call RBC and WBC? And out of all the components of blood, which one is in majority? Majority किसकी रहती है वो बतानी है. इसका आंसर तो था ऑप्शन सी, right? Okay, out of all the four components, which one is in majority? Okay, very good. इसका आंसर सही दिया है किसने? I can't see. Okay, कृपा has given the correct answer. आर्थ्रोसाइट्स है आरबीसी का. इसी तरह डब्ल्यूबीसी का क्या है? लिम्फोसाइट्स, आंसर्ड बाय राहुल शर्मा, राइट. और मेजोरिटी कंपोनेंट किसका रहता है आउट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट? मेजोरिटी में कौन रहता है? नो, नॉट आरबीसी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज प्लाज्मा, है ना. 55 to 60% ऑफ ब्लड इज टेकन बाय आवर प्लाज्मा, राइट. और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड है, ब्लड इज अ कोलॉइड. ओके, नाउ विच टाइप ऑफ टिश्यू, अच्छा, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड विद केमिस्ट्री इज द पीएच ऑफ ब्लड. कैन यू कमेंट द पीएच ऑफ ब्लड इन द चैट सेक्शन? What is the pH of blood? And the answer of this question is universal receiver, right? The next question. Yes, around 7.4. Let me put it up here. The pH of blood is 7.4, है ना. इस pH से अगर यहाँ वहां होता है ना तो बॉडी के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, राइट. एंड विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड इज अ टिश्यू. विच टाइप ऑफ टिश्यू ब्लड इज? Very good. Varnika and Rahul, okay, it is connective tissue, okay? Blood is connective tissue, right? And one more thing, hemoglobin आपको पता है. Again, there is a question related to chemistry. What is the central metal found in hemoglobin? Okay, what is the central metal found in hemoglobin? Very good. That is iron, right? And which part is known as the blood bank? ब्लड बैंक किस अपने पार्ट को बोलते हैं? Now answer this question. Which one of the following does not comprises the pharynx? Yes, Rahul, Sushant, Kripa, all correct. Spleen है उसका नाम, ठीक है. And what is the average? What should be the average, level of hemoglobin for a male? है ना, मेल में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए? Yes, 13 to 17. गर्ल्स में थोड़ा कम होता है. गर्ल्स यू कैन से 12 to 15 उनका होना चाहिए हेमोग्लोबिन ब्लड में, राइट. एंड व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल? हाँ, बॉयज का जो ज्यादा एक्टिव हेल्थी रहते हैं ना उनका मतलब 17 अराउंड रहता है हेमोग्लोबिन, ठीक है. इवन आई थिंक मेरा भी 18 ही है शायद. जस्ट गॉट इट टेस्टेड लास्ट वीक, राइट. सो एंड द एवरेज कोलेस्ट्रॉल है ना हमारी बॉडी में should be 200 ग्राम, है ना. 200 ग्राम्स होना चाहिए.
And what is the platelet count of a normal human? Platelet count कितना होना चाहिए? तो nasal cavity pharynx का part नहीं होता है, right? Now the next, the soft and spongy organ in the respiratory system. With relaunching. Yes, 1.5 to 4.5 lakhs के बीच होना चाहिए प्लेटलेट्स का काउंट, है ना? और इससे ज्यादा भी नुकसान होता है, इससे कम भी नुकसान होता है ना? दोनों के अलग अलग बीमारियों के नाम है, राइट? आप जो टेस्ट कराते हो ना सीबीसी, विच इज नोन एज कंप्लीट ब्लड काउंट, है ना? उससे पूरा ब्लड का आपका हिसाब किताब आ जाता है, कितना हेमोग्लोबिन है, कितने आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, कितने प्लेटलेट्स है ना? एवरीथिंग। इनफैक्ट जो ब्लड की स्टडी होती है ना, उसको सीरोलॉजी बोलते हैं, राइट? Okay, so the correct answer was very obvious. Option A, B, right? Now, okay, so these all were the questions, and tomorrow, we'll be having the next class on Monday, right? So Monday जो आपका next class होगा, उसमें हम लोग basically vitamins पे focus करेंगे, right? And आपको पता होना चाहिए WBC और जो platelets है ना, they are destroyed by lysosomes, and RBC is destroyed by spleen. And RBC, it is not having any nucleus. RBC का कोई nucleus नहीं होता. Even platelets, they have no nucleus, right? So that part also should be clear to you, right? So we'll meet. I want everyone to prepare regarding vitamins and nutrients. In the next class, we'll be having questions and we'll be discussing each and everything about vitamins then. Okay.